Hello bachcho, let's read the question. The question says, given below are two statements. Okay, statement 1 is alpha and beta forms of sulfur can change reversibly between themselves with slow heating or slow cooling. Statement 2 is saying that at room temperature, the stable crystalline form of sulfur is monoclinic sulfur. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. So the key concept is forms of सल्फर. ठीक है, तो सल्फर के दो फॉर्म्स होते हैं. अब हम इन दोनों के बारे में देखेंगे. ऑफ सल्फर. नाउ सल्फर के दो फॉर्म्स हैं. ठीक है, तो सल्फर मेनली एग्जिस्ट इन टू allotropic forms, and these are rhombic and monoclinic. ठीक है, तो सल्फर के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, दैट इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ सल्फर कैन चेंज रिवर्सिबली बिटवीन देमसेल्फ विद स्लो हीटिंग और स्लो कूलिंग. सो क्या होता है कि एट 369 केल्विन, ठीक है, बोथ फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम. Okay, so they are in equilibrium with each other. So it means कि sulfur rhombic, this is sulfur monoclinic. ठीक है, सल्फर रोम्बिक को कहते हैं अल्फा सल्फर एंड एस मोनोक्लिनिक को कहते हैं बीटा सल्फर. तो at 369 Kelvin, both the forms of sulfur are in equilibrium. टेम्परेचर क्या होता है? एट रूम टेम्परेचर ठीक है, अल्फा सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर. इट इज इन मोस्ट स्टेबल एंड इट इज इन येलो इन कलर. सो क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर एट rhombic, that is alpha sulfur, is most stable and it can change reversibly between themselves with slow heating or slow cooling. ठीक है, and it transformed into S monoclinic sulfur on heating at 369 Kelvin. So the stable form is S rhombic, but on heating it converts into S monoclinic. So here in statement 2 it is given that the stable crystalline form of sulfur is monoclinic sulfur, which is wrong. No, it is not monoclinic sulfur, it is S rhombic. Question में देखें तो statement 1 is correct because it is saying that alpha and beta forms of sulfur can change reversibly. Yes, they can change reversibly and there are two forms of sulfur, so it is, this statement is correct. But statement 2 is wrong because it is saying that the most stable crystalline form of sulfur is monoclinic, which is wrong. No, it is the S rhombic sulfur. So it means the option A is correct, that is statement 1 is true but 2 is false. Hope you understand it well. Best of luck.